Hello friends, welcome all of you to my channel. Wish you all happy new year 2024. आज हम लोग बेसिकली डिफर्ड टैक्स एसेट्स एंड डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़ के बारे में कॉन्सेप्चुअली डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों. और आई विल बी डिस्कसिंग द बेसिकली द टू एग्जाम्पल which clarify your concept of deferred tax assets and the deferred tax liabilities दोस्तों, which is the very important component in our balance sheet. Yeah, we say the statement of financial positions. Okay, based on this small background, let's discuss about आखिर डिफर्ड टैक्स एसेट होता क्या है दोस्तों, जिसको हम लोग शॉर्टकट DTA भी बोलते हैं. दिस इज सिंपली वी से द ओवर पेमेंट और एडवांस पेमेंट ऑफ द टैक्स. यदि आपने एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स दिया है तो उसको हम लोग डिफर्ड टैक्स एसेट बोल सकते हैं दोस्तों, which basically resulted from the differences in the tax rule and the accounting rules, which is for financial reporting friends. एंड थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपका इट रिड्यूस योर टैक्सेबल इनकम, जैसे इसको हम लोग अर्निंग बिफोर टैक्स भी बोला जाता है. एंड फोर्थ पॉइंट इज ऑल अबाउट इट रिप्रेजेंट्स द फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफ योर कंपनी. एंड द फिफ्थ पॉइंट विच इज द डिफर्ड टैक्स एसेट्स could be listed under the non current assets. That means in the balance sheet आप इसको non current asset के रूप में list कर सकते हो. That is called the fixed asset also friends. Now let's move to the next concept, that is about how do we find the deferred tax assets. जैसे मान लो कि एक example, let's discuss it. Assume that the manufacturing company based on the past experience estimate that the percentage of the computers that will be sent back for warranty repairs in the next year is 2% of the total productions. Okay, जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसका 2% आपका वारंटी के रूप में that will be based on your past experiences. Okay, now its company's total revenue जो है आपका $5,000 while the tax rate यदि 30% है तो now question is आपका deferred tax asset क्या होगा दोस्तों. Now look at the two statement I have prepared. One is the income statement for the company for the financial reporting purpose, और एक दूसरा जो है आपका income statement for the tax authority point. Okay, now ये जो total revenue है आपका it will be the same for both cases. Now जो warranty expenses होगा, जैसे as I explained earlier 2% of the total revenue जो है आपका that will be total production जो है वही आप सेल कर रहे हैं. जैसे 5,000 का 2% will be the warranty expenses. But for the financial reporting purpose you could we just deduct that warranty expenses 100. Now your taxable income कितना होगा 4,900 दोस्तों. Now since our tax rate कितना है आपका 30%, so is 1,470 is our taxable tax payable, that is your tax liability you could say. Now taxable income से आप यदि इसको डिडक्ट करोगे then you will find the net income. Similarly from the tax authority point of view, look at the revenue is the same but there is no warranty expenses. Reason is that tax authority will not allow you to deduct the warranty expenses. So taxable income आपका कितना हुआ 5,000 दोस्तों. Now tax paid is कितना आपने पे किया 30% of this is the 1,500. So net income is the your 4,500. Now यही कंसेप्ट को हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में भी इसको क्लियर कर पाएंगे दोस्तों. जैसे रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस ये नेट इनकम हुआ और आपका एक्सपेंसेस कितना है दोस्तों 1,470. यदि सो दैट कॉजेज योर नेट इनकम नेगेटिव. यदि नेट इनकम आपका नेगेटिव है दैट विल एडवर्सली अफेक्ट योर इक्विटी पोर्शंस. ये अकाउंटिंग इक्वेशन हुआ एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी. नाउ टैक्स पेबल कितना है आपका दोस्तों. टैक्स पेबल मीन्स दिस इज द पॉइंट 1,500 और लुक एट द दिस टर्म यहाँ पे आपका 1,470, दिस इज द 1,500. जो ये डिफरेंस जो आ रहा है आपका दैट इज योर नथिंग, दैट इज योर DTA, डिफर्ड टैक्स एसेट दोस्तों. दिस वे वी कुड क्लियरिफाई द एग्जाम्पल ऑफ योर डिफर्ड टैक्स एसेट दोस्तों. Now let's move to the next concept, that is the deferred tax liability दोस्तों. Deferred tax liability आपका जैसे deferred tax asset is the non-current asset, this is the non-current liabilities. Now why deferred tax liability exists?
because of difference in the timing between the, again, the tax incurred and the tax due to be paid. Now इसको हम लोग obligation to pay the tax भी बोला जाता है दोस्तों. That is, the amount of the tax payable in the future is known as your deferred tax liability. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस जो नॉन कैश एक्सपेंसेस है, ट्रीटमेंट एज पर द टैक्स लॉ और द अकाउंटिंग लॉ, दैट विल बी द डिफरेंसेस एंड दैट कॉजेज योर deferred tax liabilities. Okay, now based on this background, let's move to the one again hypothetical example दोस्तों. जैसे कि how do we find the deferred tax liability? Again मान लो कि आपका जो स्टार्टअप कंपनी है which begins on the January 1st 2019 and इसका सेल्स है आपका $8,000. It has no expenses other than depreciation दोस्तों. Now tax is इनकम टैक्स आपका 30% हुआ, और जो इक्विपमेंट परचेज किया है ये मशीन at this date with economic life is the 4 years on the January 1st 2019 for 10,000 दोस्तों, and uses the modified your accelerated cost recovery system जिसको हम लोग MACRS भी कहा जाता है दोस्तों, for the tax purpose. However, resulting the 4,000 depreciation in 2019 and declined 1,000 per year thereafter. Now the question is about what would be the deferred tax liability दोस्तों. Similarly, as we discussed the in case of your deferred tax asset, we have to prepare the two statement. One is for startup company का balance sheet, so that's your income statement, not the balance sheet. Now next one is आपका tax authority का income statement. Now इसका revenue कितना है आपका दोस्तों, this is given 8,000. okay. Now depreciation expenses जो है आपका, as I explained in the questions, straight line method has been used for the reporting purpose. okay. जैसे इसका लाइफ 4 years है, जैसे हम लोग का एक स्ट्रेट लाइन मेथड में एक इक्वेशन है, कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस सेल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाई n करोगे, देन यू विल फाइंड द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. ओके, बट वी डोंट हैव ए स्क्रिप्ट वैल्यू दोस्तों, सो 10,000 डिवाइडेड बाई आप 4 करोगे, देन यू विल फाइंड द डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस इज 2,500. सो टैक्सेबल इनकम इज 5,500 एंड टैक्स पेबल आपका हुआ 1,650 दोस्तों. ओके, so net income is 3,850, while income statement for the tax authority point of view, then let's see, revenue is this, depreciation expenses is the 4,000 as mentioned in this question. For the tax purpose, MACRS method of depreciation has been used, and 2019 में आपका depreciation कितना है, 4,000. basically we would like to know the what is the deferred tax liability for 2019 दोस्तों. सो टैक्सेबल इनकम आपका यहाँ पे कितना हुआ, 4,000. टैक्स पेड कितना किया आपने, 3% ऑफ दिस वैल्यू इज द 4,000 इंटू 0.3, सो इज द 1,200. सो नेट इनकम आपका कितना हुआ, 2,800 दोस्तों. सिमिलरली आप यदि यही कंसेप्ट को लुक एट योर इन योर इनकम स्टेटमेंट एंड द बैलेंस शीट, देन इनकम स्टेटमेंट जैसे रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस कितना है आपका, एक्सपेंसेस कितना है आपका, एक्सपेंसेस इज 1,650. okay, so आपका expenses, because we don't have any revenue for this, then you say this is 1,650 जो है आपका, that is your net income. now important point क्या है दोस्तों कि यदि net income आपका negative है, then it will negatively affect your company's equity positions. that's so it's 1,650 आपका same value. now tax payable आपका कितना हुआ, 1,400. नाउ ये जो है आपका लाइबिलिटीज और इक्विटी दोनों तो बराबर होना चाहिए, जैसे एसेट इक्वल्स टू कहा जाता है कि लाइबिलिटीज एंड इक्विटी दैट मस्ट बी बैलेंस. सो ये जो डिफरेंस हुआ आपका जैसे 450, दैट इज कॉल्ड डिफर्ड लाइबिलिटीज दोस्तों. ओके, बेसिकली हम लोग आज क्या डिस्कस किए हैं दोस्तों कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफर्ड टैक्स एसेट्स एंड द डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, व्हिच इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, yeah we say the balance sheet. so we have to be careful कि ये यदि कंपनी अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में how it records and the for the tax purpose how it has been recorded, because of these differences issues it has been it could be calculated या estimated, we say deferred tax asset and a deferred tax liabilities दोस्तों. okay, these are the things that I would like to share today. If you like this content, please like, subscribe and share this channel.
यदि आपको कोई यदि yes still you think that some other concept of accounting, then I shall discuss in coming future also. Thank you all of you for watching this video.